Good morning, everyone, and welcome to Morning Con Call. First, we start with technical and data of the efficiency trading section index was broadly trading in a narrow range only. If you see majorly in the previous year's trading range, but a little on the higher side, but Nifty facing hurdles near to 360 or 370 odd level. That is coming to the 50 days exponential average also. From the highs, we also see some profit booking, but and we tested the days low to test Nifty 19,250 odd levels and found some decent support in the closing hour to end above 19,300 for the second level. Now, if you see the Nifty is struggling to move above 19,400 odd, so then we are facing resistance at the higher levels. One, if Nifty closes above 19,400, then only a fresh momentum, or we can say an intermediate bottom can be seen. Otherwise, time-wise correction, and we could be heading lower to 19,200 to 19,000. Been ideal support for the index going ahead from here. On the sector specific front, if you see yesterday, there was some buying in the PSU bank stocks and PSU bank stocks, pharma and healthcare stocks, but IT and FMCG were the laggards and they were tracking the index and majorly the market was focused on the Reliance EGM also, which in the last hour Reliance dragged the market taking to the day's low again. So coming to the Bank Nifty also, if you see it was a good session in the Bank Nifty closing with a 263 points gain and Bank Nifty inching towards 44,500 odd zones. And on the stock specific front, if you see Federal Bank, PNB and HDFC Bank had witnessed buying in from the support levels while Bandhan and IDFC banks were being on the negative side. So Bank Nifty, if you see, is in a major range of 43,500 to 44,500. This is a 1,000 point range with the Bank Nifty is trading in shuttling in between the two zones. Any side if the Bank Nifty gives a breakout or breakdown, there could be a one-way move in that index also going ahead. And but at that time, it doesn't. It would be trading in a sideways. It would be option writers till that moment. Now coming to the futures day, if you see Nifty futures has seen a long build up to 1.75 odd percentage, and if you see PCR is now inching towards a 0.99 levels from 0.83. So Nifty PCR is at close to one level. And on the options front, if you see 19,500 strikes have witnessed major writing in the call front, while on the put side, if you see 19,300 is acting as a put support. If you see, let's see this expiry, what does it break 19,300 or we get a support from those zones? Similarly, Bank Nifty futures is also showing a long buffer from the tune of 4 odd percentage, while PCR is above 1 odd levels in Bank Nifty, sorry. Similarly, the options data 44,500 is witness a call buying, whereas put trading additions are seen for this. In the put trading, if you see 44,000 and 43,900 is seeing a good base over here. Coming to the FIS data, FIS are have if you listen, have added 8,000 contracts, so they are net short by 30. So the ratio stands at 43%. While in the cash market, they are again sellers by 1393 odd crore, while DI as a buyer 1264 odd crores. Long builders in yesterday's trading session were witnessed in good long builders were seen in NMDC, Apollo Hospital, Ultra Cement, while shorts were witnessed in Dabur, PI Industries, and Balkrishna Tires. Stocks should be kept on radar, or we should see at Bharat Forge, which is looking good on charts, and they're getting good defense orders in the same. So that should be looked on charts. Second, Fin Pipes and Jindal Steel, these are stocks which are looking good on charts. Coming to the morning gift is showing a flattish opening of 23 odd points. So if we see that if yesterday's lows are not reached, so we could be trading in a sideways range to 19,400 on our highest and our lows and 19,258 levels. So overall, that's it from mine. I'll hand over to Devang sir for more. Thank you. Over to you, sir. Thank you, Idendra. Good morning, all. So on Manappuram Finance, so the ED rate that was done against VP Nandskumar uh, has in the final hearing, both the parties in relation to the ED rate, the Honorable High Court of Kerala has quashed the enforcement case information report and registered by the enforcement director. So now it is positive for Manappuram Finance. In terms of banking, credit growth has increased by 19.7% during the fortnight, driven by merger between HDFC and HDFC Bank Limited. Uh, it would have been 14.8% if not the amalgamation. In case of the deposit growth, the merger impact was more limited. Bank deposit growth touches 6-year high of 13.5%. In fortnight ended August 11, the HDFC deal did not happen, and the deposit growth rate would have been
12.8%. So overall credit growth and deposit growth remains healthy, and we have a positive view on the banking sector. In terms of LTI Mindtree, the IT firm has announced a strategic collaboration with automation platform Cast AI to help business optimize investments. The partnership will help companies save over 60% of cloud cost as they modernize legacy application for cloud migration. We had also seen the similar commentary. Sorry. We had seen a similar commentary from Emphasis Group where they are saying that only 30% of the data is moved to cloud. So cloud migration and cloud migration partnership will bode well for the IT sector. HCL Tech has also done similar deal, and it bodes well for HCL Tech also. So overall, in terms of demand also, Emphasis has highlighted that there are some green shoots in demand. So we believe that IT could see a positive structure going forward. In Bharat Forge, Kalyani Rafael Advanced Systems Private Limited, a joint venture company between Kalyani Strategic Systems Limited uh, and has bagged an order amounting to 2,875 million eh, and the Indian military defense for supply of missile systems. The order is expected to be executed over next 12 months. So this bodes well for Bharat Forge. For SJVN, the state-run power company unit, SJVN Green Energy has bagged a deal from APDCL for three solar projects with a cumulative capacity of 320 megawatt in Assam. The cost of the project is 1,900 crores and bodes well for SJVN. Sun Pharma aims to spend 7 to 8% of its sales in the current fiscal on R&D to further strengthen its product portfolio across therapeutic segments. It also expects high single-digit consolidated top-line growth for FY24. So this is positive for Sun Pharma. For Schaeffler India, the company has entered into a purchase agreement for the acquisition of 100% of shareholding of KRSV Innovative Auto Solutions following the board's approval. For KRBL, the company submitted a letter of offer for buyback up to 65 lakhs, fully paid up equity shares of rupees 1 each at 500 per share, amounting to rupees 325 crores through the tender offer process. That's it from my end. Over to you, Shritijana. Thank you, sir. Good morning, everyone. Few updates from my side. Oil and Natural Gas Corporation India Limited, in talks with the global entities, including Malaysia's Gentry, to form a joint venture in energy storage. The Arun Kumar Singh said that the energy giant makes strides in its energy transition journey. So NGC would look at both battery storage and pump storage project, that is PSP. The next update on NBCC. The NBCC firm has clinched a significant around 66.3 crore contract from the Indian Medical Association IMA, and the deal encompasses the blueprint design and development of the IMA Indian Medical House, slated to be situated in New Delhi. The next update on Gokuldas Exports. Through its wholly owned subsidiary, company has entered into an agreement to acquire Atroco Group for $55 million, and leading manufacturer of apparel with a strong market position and customer relationship across the US and Europe. The transaction is expected to be closed by quarter three in financial year 24, around October to December 2023. The next update on Bayer Crop Science. The company has declared significant leadership transition yesterday. So Durai Swami Narayan, who presently holds the title of Vice Chairman and Managing Director and CEO, will be stepping down from his role by October 31st, 2023, in preparation for a new phase with the Bayer US, and Executive Director Simon will be exiting his role as a whole-time director. Last update on APL Apollo. Promoter will reportedly sell stake up to 2.60 million shares, which is around 0.85% equity via block deals. The floor price is likely around 1,595 per share. 4.3% discount to the current market price. So that's it from my end. Now I will hand over to Prabhakar sir. Thank you, and over to you, sir. Good morning, team.
AI Engineering, APL Apollo, Bharat Forge, BS Soft, Finolex Pipe, GMDC, Garbare High Tech, Moltech, Moltech Plastic, or packaging, whatever we call it, Nelcast, Sun TV, Shirma SGS, TCPL Packaging, you can Venus Pipe. These are few stocks which are in momentum and they can continue to be there. Bharat Forge is having a lot of news. So I think that is one stock to watch out for. Sterlite Power said that it has secured order for Rajasthan Phase 3 20 gigabyte Part F transmission project for 350 kilometers, 765 kV transmission corridor. This will link the energy renewable zone, and this is a built, own, operate, transfer for 35 years. There is G20 meeting which is likely to happen on 8th, 9th and 10th September, the coming month. So many flights are cancelled. So somebody visiting Delhi has to be very careful. The government is making sure that this event becomes very successful. This will be the closing event of 1 year presidency of Indian G20 thing. So there has been a lot of meeting there. Even Business 20 meeting, which recently ended, where there were a lot of announcement which came. So I think this is very positive for India over a period of time. India may see lowest monsoon rains in 8 years. This can impact rural spending. So FMCG two-wheeler will be few segments which will be impacted negatively. Reliance had a AGM yesterday. So there are few things which are positive. At least 5-year plan was rolled out for succession. Mukesh Ambani will be the chairman for 5 years, but the 3 children were appointed non-executive director, whereas Neeta Ambani resigned from the board and she will be pursuing other interests. But there are very negative things. People expected a roadmap for Reliance Retail and Jio Infocom. About few years back, Reliance announced that demerger of Infocom, Jio Infocom, and Reliance Retail will be announced. Geo Finance, nothing has been done. So that is why the stock reacted negatively. And still I find a lot of queries on Geo Finance. Geo Finance, still there is no roadmap. Now they have made a lot of announcement to become actionable thing in equity market takes 3 to 4 years. So we had AB Capital being listed about few years back. It took 3-4 years for that stock to cross the listing high. So if you have 5 years, 6 years time, it is okay. But if you have 2-3 years time, I think you need to avoid Geo Finance at this point of time. Thus, Export, the company through its wholly owned subsidiary will acquire UAE-based Axtro, a leading manufacturer of apparel, for $55 million, and it will be funded by debt and internal accrual. So Gokul Das has a con call today. Post con call, there is a meaningful update. We will come back and update. Government has issued notification of basmati rice. So here they have said, rice below $1,200 per ton, you cannot export. So there will be a committee for that. So the rice companies have said there are few varieties. So KRBL, GRM Overseas, LT Food and Cognir Food are few companies which are doing that. So there has been a negative impact because of that. BPCL plans to invest $18.16 billion in the next 5 years to grow oil business and renewable portfolio. No major impact on BPCL. It is just a roadmap. With that, over to you, team. Yeah, thank you, sir, and good morning, everyone.
तो शुरू करते हैं आज के हिंदी अपडेट्स के साथ। स्टार्टिंग में अगर कुछ स्टॉक्स पे नजर डाली जहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम पिछले कुछ दिनों से बना हुआ है एंड आने वाले कुछ सेशन में भी एक पॉजिटिव आउटलुक जिस पे रहेगा, तो वो है एआई इंजीनियरिंग, एपीएल अपोलो, गरवारे हाईटेक, भारत फोर्ज, सन टीवी एक्सेट्रा। ये सब स्टॉक्स है जहाँ पे नजर रखी जा सकती है। इसके बाद अगर स्टरलाइट पावर की बात करें, तो स्टरलाइट पावर ने एक ऑर्डर सिक्योर किया है राजस्थान फेज 3 के लिए। G20 मीटिंग की अगर बात करें तो G20 जो है मोस्ट प्रोबेबली 8, 9 और 10 सितंबर को होने के चांसेस है। गवर्नमेंट जो है इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए काफी एफर्ट्स कर रही है, बट एट द सेम टाइम इस मीटिंग के चलते, शेड्यूल के चलते बहुत सारी फ्लाइट्स उसके पहले कैंसिल होने के भी चांसेस है। ओवरऑल मॉनसून की अगर बात करें तो इंडिया में एक रोबस्ट मॉनसून देखने की पॉसिबिलिटी है इस साल। सो इसका एक इम्पैक्ट डेफिनेटली इकोनॉमी पे रहेगा। कल रिलायंस इंडस्ट्रीज का एजीएम हुआ था, इसमें बहुत सारे जो है पॉजिटिव और नेगेटिव इंसाइट्स निकल के आ रहे हैं। एक तरफ देखिए तो मुकेश अंबानी जो है ये कंटिन्यू करेंगे एज द चेयरमैन ऑफ द कंपनी फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स, जबकि नीता अंबानी ने जो है इन्होंने बोर्ड से स्टेप डाउन किया है। सो आने वाले टाइम में नीता अंबानी जी सिर्फ उनके फाउंडेशन बिजनेस पे फोकस करेगी, जो उनका फाउंडेशन है चैरिटी टुवर्ड्स, उस पे फोकस करेंगी। इसके अलावा जियो फाइनेंस जो है इसके रिगार्डिंग कोई भी पॉजिटिव अपडेट कल के एजीएम में नहीं मिला था। सो डेफिनेटली एक नेगेटिव इम्पैक्ट स्टॉक पे देखा गया था। हाँ, आमतौर पे अगर देखें तो कोई भी स्टॉक जो है फिनेंस इंडस्ट्री में वो एक्शनेबल मूव देने के लिए 3 से 4 साल लेता है लिस्टिंग के बाद। सो अगर किसी का शॉर्ट टर्म व्यू है रिलायंस, सॉरी जियो फाइनेंस पे 3 4 साल से कम, तो यहाँ पे कोई शॉर्ट टर्म गेन्स दिखाई नहीं दे रहे। सो कोई बाय रिकमेंडेशन या पॉजिटिव आउटलुक नहीं रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए तो एबी कैपिटल अगेन इस सेगमेंट में से एक ऐसा स्टॉक था जिसने लिस्टिंग के बाद उसका जो लिस्टिंग हाई क्रॉस करने में मोर देन 3 to 4 years लिए थे। लास्ट इसके बाद अगर देखें तो गवर्नमेंट ने जो है भागवती राइस पे एक नोटिफिकेशन इशू किया है, जिसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट इसके रिलेटेड स्टॉक्स पे देखा गया था, जैसे केआरबीएल हो, एलटी फूड्स हो। नेक्स्ट अपडेट जो है वो है मन्नपुरम फाइनेंस के ऊपर एक पॉजिटिव अपडेट है, जहाँ पे इनकी जो रिसेंट ईडी रेड पड़ी थी अगेंस्ट मिस्टर वीपी नंद कुमार, ये जो रेड थी ये थी बेस्ड ऑन अ कंप्लेंट जो फाइल की गई थी मिस्टर पीके सागर से। तो ये जो ओवरऑल ईडी की रेड थी या जो इशू था, इसको टोटली जो है एफआईआर को खारिज कर दिया गया है। तो ये एक डेफिनेटली पॉजिटिव अपडेट रहेगा मणप्पुरम फाइनेंस के लिए, एंड इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट स्टॉक प्राइस पे कल के सेशन में भी देखने मिला था। ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर की अगर बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिविटी दिख रही है। क्रेडिट ग्रोथ की अगर बात करें तो 19.7% से जो है क्रेडिट ग्रोथ इंक्रीज हुई है बैंकिंग सेक्टर की पिछले 2 हफ्तों में। ये ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ जो थी ये ड्रिवन थी बाय मर्जर बिटवीन एचडीएफसी एंड एचडीएफसी बैंक। ओवरऑल अगर बात करें तो मर्जर को ओवरलुक करते हुए 14.8% की क्रेडिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी, बट बिकॉज ऑफ द मर्जर यहाँ पे एक इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है। डिपॉजिट ग्रोथ की अगर बात करें तो बैंक का जो डिपॉजिट ग्रोथ है, इन्होंने एक 6 ईयर हाई टच किया है 13.5% पे इन द फोर्टनाइट अगस्त 11 तक की अगर हम बात करें तो। एलटीआई माइंड ट्री पे एक पॉजिटिव अपडेट है, जहाँ पे कंपनी ने एक स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन अनाउंस किया है ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म सीएसटी एआई के साथ। ये और जो ओवरऑल कोलैबोरेशन है ये इनके बिजनेस को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करेगा इन क्लाउड इन्वेस्टमेंट्स। ये ओवरऑल पार्टनरशिप जो है इन दोनों कंपनीज को हेल्प करेगी टू सेव ओवर 60% ऑन क्लाउड कॉस्ट। नेक्स्ट अपडेट जो है वो है भारत फोर्ज के ऊपर, अगेन एक पॉजिटिव अपडेट है, जहाँ पे कल्याणी रेफल एडवांस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड जो है एक जॉइंट वेंचर कंपनी है कल्याण स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स की, जो एक भारत फोर्ज की सब्सिडरी एंड रेफल एडवांस सिस्टम जो कंपनी है, इन्होंने एक जॉइंट वेंचर किया है एंड इन्होंने एक ऑर्डर बैक किया है विच इज अमाउंटिंग टू रुपीज 2875.1 million इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। ये जो ऑर्डर है ये इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से आया है फॉर द सप्लाई ऑफ मिसाइल सिस्टम्स।
एसजेवीएन की अगर बात करें तो कंपनी पे एक पॉजिटिव अपडेट है, जहां पे एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी इन्होंने एक डील बैक की है फ्रॉम ईपीडीसीएल। ये जो डील है ये है 3 सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए विद क्यूमुलेटिव कैपेसिटी ऑफ 320 मेगावाट, आसाम रीजन में होगा। ओवरऑल जो कॉस्ट है पूरे प्रोजेक्ट की वो है ₹1900 करोड़। सन फार्मास्यूटिकल के ऊपर एक पॉजिटिव अपडेट है, जहाँ पे कंपनी जो है अपना 7 से 8% स्पेंड करने वाली है सेल्स में करंट फिजिकल के ऑन सेल्स का जो 7 से 8% है वो जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज पे जो है स्पेंड करने वाली है टू फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग इट्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अक्रॉस थेरेप्यूटिक सेगमेंट्स। इसके बाद जो अपडेट है वो है शेफलर इंडिया के ऊपर एक न्यूट्रल अपडेट है, जहाँ पे कंपनी ने एक शेयर परचेस एग्रीमेंट इंटर किया है फॉर द एक्विजिशन ऑफ 100% ऑफ द शेयर होल्डिंग ऑफ KRSV इनोवेटिव ऑटो सॉल्यूशंस फॉलोइंग द बोर्ड्स अप्रूवल। इसके अलावा कुछ मार्केट के अपडेट्स पे अगर फोकस करें तो कल के सेशन में हमने देखा कि एक पॉजिटिविटी मार्केट में देखी गई थी, एंड बेस्ड ऑन दैट आज के सेशन में भी एक पॉजिटिविटी दोनों इंडाइसेस में एक्सपेक्ट की जा सकती है। ग्लोबल मार्केट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे भी यूएस और यूरोपियन मार्केट आज काफी पॉजिटिव साइड पे ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी का एक जो मेजर जो बड़ा रेंज होगा वो होगा 18,800 से लेके 19,800 पे। एट द सेम टाइम अगर इंट्राडे रेंज की बात करें तो 19,300 एक इंट्राडे सपोर्ट माना जा सकता है आज के लिए, जबकि 19,500 एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर सकता है। बट अगर निफ्टी 19,500 के ऊपर निकल जाता है तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग भी देखी जा सकती है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम कल के सेशन में देखने मिला था। ओवरऑल जो इंडेक्स है वो 43,500 से लेके 45,000 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। बट आज के दिन की अगर बात करें तो 44,500 एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो यहाँ से अगेन एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी बैंक निफ्टी में देखी जा सकती है। कुछ स्टॉक्स जिस पे आज नजर रखी जा सकती है ऑन अ पॉजिटिव साइड वो है जिंदल स्टील, फिनोलेक्स पाइप्स एंड भारत फोर्ज। इसके अलावा अगर एफआईआईज और डीआईएस की एक्टिविटी की बात करें तो कल के सेशन में एफआईआईज ने अगेन 1393.25 करोड़ की सेलिंग की थी, जबकि डीआईएस ने 1264.01 करोड़ की बाइंग की थी। फ्यूचर्स डेटा के तरफ अगर नजर डाले तो कुछ स्टॉक्स जहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप कल के सेशन में देखने मिला वो है एनएमडीसी, अपोलो हॉस्पिटल्स एंड अल्ट्राटेक सीमेंट, जबकि कुछ स्टॉक्स जहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिला था वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, पीआई इंडस्ट्रीज एंड डाबर। So this was all from our side. Thank you for attending the morning con call. Have a good day.